गुड इवनिंग साथियों। आज मैं आपको ओके आज मैं आपको एक अच्छा खासा इंट्राडे स्कैल्पिंग का सुपर ट्रेंड, विलियम्स फ्रैक्टल और मूविंग एवरेज, ये तीन ही है और कोई इंडिकेटर नहीं। ठीक है, मूविंग एवरेज में बेसिकली आपको बाय एंड सेल की पोजीशनिंग के लिए एक ट्रेंड डायरेक्शन चाहिए। और सुपर ट्रेंड तो आप जानते ही वो सुपर ट्रेंड क्या है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि हाउ एग्जैक्टली द सुपर ट्रेंड वर्क्स। तो इसके लिए मैं चलूंगा रिप्ले में, एंड आई प्रिफर टू गो विद दिस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पोर्शन। ओके, इसमें रूल्स क्या है? रूल्स ये है, एक्चुअली ये इसमें थोड़ा प्रॉब्लम क्या है कि मुझे 200 का सुपर ट्रेंड नहीं आ रहा है। इसमें रूल्स ये है कि अगर एक मिनट, कहाँ पे, या इसमें रूल्स ये है कि इफ प्राइस इज अबाउट 20 and below 200, usually it goes and tags the 200, but only when it breaks the fractal, when it breaks the fractal above the super trend, that is a buy setup. When it is below, when it breaks lower fractal below the super trend, then it goes away from the 200 and then come towards the 200. ठीक है, तो ये एक आइडियोलॉजी है। तो चलो चलते हैं, यहाँ से देखते हैं। आई थिंक देखते हैं, चले दिस आई मेक इट एज 65। ये 35 है क्या? 30 है, 30 होगा, 30 आई थिंक, 30 यस। ठीक है, देखते हैं। Now price comes below because I don't have 200 with me. अभी मुझे 200 नहीं है इसका डायरेक्शन देने के लिए। अदरवाइज फर्स्ट जिसके 200 के इसके नीचे आता है तो यहां से सेल करना है। लेकिन हाँ, यहाँ पे 200 आ गया। नाउ आई थिंक आई एम गेटिंग ए 200 से इसके ऊपर अगर क्लोज होती है तो बाय करना है विदाउट ब्रेकिंग दिस लो। ठीक है, एक सेकेंड। Now what happened? माफ कीजिए। Now what happened is 200 is above here. Now this has broken the low here. Should we go short? The distance is very small. If you go short here, your stop will be this. ठीक है? I will show you that. I will go for the short sell here, and your stop is, I will put this stop as this. This is your stop. So 50,940 is the stop and 50,799, around about 140 points. So let's see. We need 1:1 in this case. एक हम लोग कितना 756 में आए, तो 799, 800 से हम लोगों को आना चाहिए 670 के पास आना चाहिए, तभी हम बुक करेंगे 1:1 का। Now notice the price started hovering here only, so we are going to reduce our stop from this to the above the super trend. ठीक है, let's see. So now the stop is very near now. Now super trend has turned down. So 1:1 का कितना, ये पहला ये देख लेते। We sold here, our stop was here 142 points and our target is 142 points, 149 points, let's say 149 points. तो यहाँ पे कहीं हम लोगों को प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। 1:1 का ही चलता है ज़्यादा इसमें,
क्योंकि वी आर ट्रेडिंग ऑन 1 मिनट. सो वी प्रैक्टिकली रीच द प्रॉफिट. हम लोग एक्चुअली रीच हो गए. ठीक है, आप देख सकते हो उसके नीचे भी आ रहा है वो. अगर आप ट्रायलिंग करना चाहते हो तो यू कैन ट्रायल इट. नाउ व्हाट हैपेंड इज इट इज ट्राइंग टू क्लाइम बैक 20 एंड इट विल लाइकली टू हेड टुवर्ड्स 200. ठीक है, तो इसको क्लीन करते हैं. लेट्स सी. ये सुपर ट्रेंड अभी अभी सुपर ट्रेंड यहां पे आप देख सकते हो. सुपर ट्रेंड अभी थोड़ा थोड़ा सा स्लो हो रहा है. ये ऐसे कांस्टेंट नहीं है और ऐसा डाउन लाइन नहीं है सुपर ट्रेंड की. ऐसे ऐसे जैसे यहां पे स्लो हुआ वैसे स्लो हो रहा है सुपर ट्रेंड. ओके, ठीक है, लेट्स सी. एट सम पॉइंट सुपर ट्रेंड likely to go in a reversal mode because of the slowing of the momentum. लेकिन हमें अगर बाय करना है तो व्हाट इज अ बाय सेटअप, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. पहला सुपर ट्रेंड को ग्रीन में कन्वर्ट होने दीजिए. लेट इट कन्वर्ट इनटू ग्रीन. इट इज एक्चुअली ट्रेलिंग स्टॉप. अगर सुपर ट्रेंड का क्लोज अबव का ट्रेलिंग स्टॉप रखते हैं तो आप यू शुड हैव मेड another 100 or 150 points in this. You can learn all these things by joining a course, by understanding basic rhythms of the market. And 1 second, sorry, something happened. Okay, see this drop you would have taken this drop, but only by trailing stop, not by any other things. Now this is the drop, almost 710 points, almost 710 points by just trailing the stop. This is the trailing stop, first trailing, this is the second trailing stop, this is third trailing stop, then it dropped, then it made up one more, then it dropped. Now it is away from 200. Remember this is 200, right, in front of you. This is 20, this is away from 200. It is more vulnerable for reversal now. It is more vulnerable for reversal. तो आपको मैं एक, हाँ, नाउ सुपर ट्रेंड टर्न्ड ग्रीन. ठीक है, 1 मिनट. दिस इज द फर्स्ट फ्रैक्टल ब्रेक. दिस पर्टिकुलर कैंडल आई वुड लाइक टू शो यू वेरी पर्टिकुलरली कि ये कैंडल ने फर्स्ट फ्रैक्टल ब्रेक किया है. ठीक है, नाउ इट स्टैंड्स. यू कैन गो लॉन्ग, लेकिन आपका टारगेट क्या है? 1:1. यूजुअली 1:1. ये 1:1 वाला है, 221 पॉइंट. ठीक है, यू कैन गो लॉन्ग. ओके, सो आई विल गो बाय. नाउ ये बाय की तरफ हो गए. आपका स्टॉप यहां नीचे है, ध्यान में रखना. आई विल रिमूव दिस. हमारा टेक प्रॉफिट कौन सा था? 1 मिनट. लेट्स सी विच वाज द टेक प्रॉफिट लाइन कौन सा था? 221 का. हाँ, सो दिस इज 1:1. यहाँ पे हम लोग बुक कर रहे हैं 50,542 में हम लोग बुक कर. यू कैन ट्रायल यूजिंग. नाउ व्हाट हैपेंड? नाउ luckily you have made a great jump from this height. 1 minute. From this height you have made almost 1300 points.
And this much away from super trend and away from the moving average, straight away book the profit. Book the profit and take the money. That's all. Take the money off the chart. ठीक है. Now what is going to happen? I think this is today's. ये आज का होगा. हाँ, this is today. ये आज का हुआ. ठीक है. Now any buy after so much of gap, it has to have a compulsory minimum 20% of this length. Has to be, discount has to come, that is up to somewhere super trend. Otherwise, buy is a bad idea. It has to come near the super trend. It has to come near the super trend. Then only you can look for a buy setup. Otherwise, you can look for sell setup. Because why you look for sell setup? The 200 is still horizontal. And if it goes below 200, below super trend, you can go, but this will be somewhere around half a point or 1% move. Okay. Now, this is the first fractal low that it has made. Once this is broken, you can short sell, but the stop remains the today's high, right? You can short sell. But when it is above 200, we usually say it is 1:1. 1:1 means you have 347 point stop and you have 340, say 355 points take profit. Only when this low is broken, huh? Remember about it. Now what happens when it goes back to the super trend, near super trend? Now it established a stop loss here. Super trend becomes the top stop loss, and any break below this will be your entry point. Remember this. Now again super trend is trying to show a buy setup. Is it acceptable? In some cases, usually if you buy here, your stop is very small here, and your take profit will be slightly above the new type, the recent high. Okay. Say for instance, we bought it. Let's see. Let it cross actually. See, it did not cross that. It did not cross the first fractal. So it is coming down. Okay. Now you have to wait for one more fractal to form here. Because it has just turned negative. You have to wait for one more fractal to form here. You cannot sell blindly. Now fractal is formed. Below this you can sell. Yeah, now there is a sell setup. We sold it here and the stop remain this. Okay? And take profit. Let me get that correctly. Sorry, let me get the short one. I think take profit is around about 1:1 is 276 points. Okay. So let me get again. Sorry. So let me get this here to book the profit. Because we are scalping on 1 minute, so this is very, very essential to have. Now we are booking it. Correct? To have a proper judgment, 1:1. That means we booked. So the money can be made if you are a scalper. The money can be turned into 5 minutes. Can we trade it on 5 minutes? Yes, of course you can trade it on 5 minutes. But on 5 minutes, remember, only this was your buy setup today. Only this. This was your buy setup. This was your stop. And you had when you go for higher time frame,
The long setup what you get is 1:2. That means you get this 185 points and you get 1:2 is this. 1:2 is this profit. 374 points. And if you are buying, if you want to buy an overnight also, you need to understand there is no buy setup here. There is no buy setup here in 5 minutes. But if you go for 3 minutes, you may get a buy setup here. No, you don't have buy setup. But if you go for 1 minute, yes, you will get a buy setup here. It is just about 20 and it is heading towards 200. First fractal break, you bought it and your stop is here. Making money is easy, but consistently making a profitable trade needs education and a discipline that you follow every time when you want to trade. Okay, I hope this will give you an understanding, and if you are interested, please join. There are rules, regulations, and you need to follow the patterns. You can make money every single day. All right, thank you.